Today we are going to discuss solid state. See, first of all, I would like to discuss about matter. So everyone know that matter is everything which occupies some space or mass. Basically, matter is divided into three different parts called solid, liquid, and gas. And first of all, I am going to define on the basis of intermolecular forces. Intermolecular forces. So, according to intermolecular forces, solid, liquid, and gas. First of all, in solid, we have strong intermolecular force. And in liquid, weak intermolecular forces. And in gas, there is no intermolecular force. Except van der Waals. Because van der Waals is the weakest force which is always present with all type of gaseous molecule. So this is the first on the basis of intermolecular forces. The next part, intermolecular space. Intermolecular space is exactly opposite to the intermolecular forces. So in case of solid, there is no intermolecular space. In case of liquid, there is molecular space present. But when we talk about gas, it means if in gaseous molecule there is no intermolecular forces, it means it has more and more space than other matters. So large intermolecular space. So this is the two different format to explain about the solid, liquid, and gases. The next part on the basis of volume and shape. When we will talk about volume, solid has fixed volume, fixed shape, or you can say definite shape. But when we talk about liquid, it has only fixed volume and no definite shape. No definite shape because shape depends on type of container. Let's say you are having an utensil with circular shape. Then water has circular shape. In otherwise, it depends कि आप liquid को किस जगह पे रख रहे हो. The third part, no fixed volume and no fixed shape. Because gaseous molecule they have weak intermolecular forces, so they can move in all the possible directions. So we cannot predict the shape or volume of the gas. This is the fourth part. Come to the next point. Compressive heat.
When we talk about compressibility, solid is incompressible in nature. Incompressible in nature. While liquid very less compressibility. Liquid has very less compressibility and gaseous molecule can compress easily. You can compress the gaseous molecule. That's why you are getting CNG, LPG, all these. They are CNG is compressible natural gases. So basically, gaseous molecule can be compressed easily, while liquid molecule has very less compressibility. And when we will talk about solid, there is no compressibility. So this is the definition of solid, liquid, and gas. But our chapter is solid state. So we have to discuss about only this part, solid state. We will discuss this liquid part in chapter number 2, solution, and this gaseous part we have already done in 11th class in kinetic theory of gases and states of matter. So we are going to discuss about solid state. So solid is basically two types. The first one is crystalline, the second one is amorphous. Crystalline and amorphous. Amorphous is also known as indefinite solid. Indefinite solid. So what is crystalline and amorphous? We have some examples like metals like copper, silver, gold, etc. Another part, in case of amorphous, we have some examples like glass, plastic, rubber, and many more. What is the difference between all these two? The first difference, let's say these are the particles. And we have another part with irregular format. So the basic difference of crystalline and amorphous, it has long range order. It has long range order. And in amorphous, you can say short range order. What is the meaning of long range and short range order? Suppose you have 200 square foot area, and I am saying you, like, you have to arrange the particles in regular as well as in irregular manner. So जैसे ही आप irregular manner में arrange करोगे तो कोई भी particle कहीं भी रखा जाएगा. तो जब कोई भी particle कहीं भी रखा जाएगा तो obviously क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स की रेंज होगी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो स्टार्ट तो होगा किसी इनिशियल पॉइंट से, लेकिन वो कहीं भी रखने की वजह से उसकी जो रेंज होगी वो शॉर्ट रेंज हो जाएगी. बट ऐसा क्रिस्टलाइन में नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टलाइन में वी आर अरेंजिंग द पार्टिकल्स इन द रेगुलर मैनर. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. नाउ अनदर पार्ट ऑफ डेफिनेशन
क्रिस्टलाइन सॉलिड melting point, it has fixed melting point. इसका जो melting point होता है वो फिक्स होता है, बट अमोर्फस की अगर हम बात करें तो melting point depends on range of the particles. It means when we will talk about amorphous solid, तो मेल्टिंग पॉइंट उस अमोर्फस सॉलिड का हमेशा फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास, तो ग्लास जो होगा, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा कि ग्लास का नेचर कैसा है। वी हैव मेनी टाइप ऑफ ग्लासेस इन आवर नेचर, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेट्स से यू हैव डायमंड, सो डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में एक शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बट अमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अनदर पार्ट दैट इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। एनिसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाइल दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। नाउ व्हाट डज इट मीन एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक? सी, एनिसोट्रोपिक स्टैंड फॉर, एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और उस लेयर्ड स्ट्रक्चर में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दो प्लेन बनते हैं, एक ऐसा प्लेन बनता है और एक ऐसा प्लेन बनता है। तो इस प्लेन में तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और इस वाले प्लेन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। इट मीन्स वो कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक सॉलिड की, पर उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी, वो क्या है, वेरी कर रही है। वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि उसके अरेंजमेंट की वजह से। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि एनिसोट्रोपिक वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट अमोर्फस, इट मींस इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक स्टैंड फॉर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी in all the direction. Same physical property in all the direction, like refractive index of glass, or otherwise you can say conductivity. So we have some examples for anisotropic and isotropic. So these are the crystalline and amorphous. One more thing, we can convert crystalline solid into amorphous solid easily. Let's say मैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करता हूँ, तो जब मैं हीट करूँगा तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, सपोज दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आई एम हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मेरे हीट करने से इसके जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह से इधर उधर जा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, रैपिड कूलिंग कर रहा हूँ हीट करने के बाद। तो रैपिड कूलिंग करने पर मुझे ये ऑब्जर्व होगा कि पार्टिकल्स को धीरे धीरे टाइम मिलेगा वहीं पर आने के लिए। अगर वो सेम जगह पर आ जाते हैं तो इट मींस दे आर हैविंग परफेक्ट क्रिस्टलाइन नेचर, बिकॉज वो रैपिड कूलिंग पर एक जगह पर आ गए। बट अगर मैं उसी क्रिस्टल को हीट कर दूं और हीट करने के बाद मैं उसे सुपर कूलिंग करूँ, सुपर कूलिंग करने पर उसकी एक अरेंजमेंट बनेगी, उस अरेंजमेंट को हम नाम देंगे ऑर्बिट अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल एक क्लास है और उस क्लास में लाइक वी हैव 60 स्टूडेंट्स, और मैंने उनको बोला कि आप सभी यहाँ से बाहर जाएं, और बाहर जाने के बाद यू ऑल गाइस हैव 10 मिनट्स टू सिट ऑन योर रेगुलर पोजीशन, तो दे कैन इजीली मैनेज, और वो एक जगह पर आराम से बैठ जाएंगे आकर। इट मीन्स हम रैपिड कूलिंग की बात कर रहे हैं, बट मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप सभी बाहर जाएं, एंड बाहर जाने के बाद जब आपको अंदर आना तो यू हैव ओनली 1 मिनट
to sit anywhere in class, but you have to sit in class. तो उस केस में क्या होगा, भगदड़ मचेगी और कोई भी कहीं पे भी आके बैठ सकता है, और अगर कोई भी कहीं पे आके बैठ जाता है, इट मींस दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ऑर्बिट अरेंजमेंट. तो in this case we can say when solid crystal is heated and on supercooling it becomes amorphous, but on rapid cooling it will remain same because the particles they have some time to retain their position. That's what. So this is the main difference between crystalline and amorphous. एक और बात, crystalline solid को हम एक और नाम देते हैं true solid. This is true solid. Why this is known as true solid? पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है CBSE के किसी एग्जाम्स में, तो like the question is why crystalline solid is known as true solid? What is the reason behind it? True solid इसलिए बोला जाता है because it has always regular arrangement. So because of regularity, it is known as true solid. But amorphous is not a true solid because it has different arrangement, or because of different arrangement, like their particles are randomly here and there. So that is why we are saying this is amorphous. The next part is we are talking about another part of amorphous called glass and quartz. We have two different examples, glass and quartz. You are getting glass is an example of amorphous. It means glass is an amorphous solid. It is amorphous solid. Another point of glass is what? It is also known as semi-solid, or you can say pseudo-solid. Why it is known as pseudo-solid? Because it can flow like a liquid. For example, जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो शीशे ग्लास होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे से थिक हो जाते हैं और बीच में से थिन हो जाते हैं because of they can flow with respect to temperature. So that is why glass are considered as semi-solid or pseudo-solid. But quartz की अगर हम बात करें तो quartz is basically SiO2, silica. This is silica and it has crystalline nature. It has crystalline nature. क्वार्ट्ज का जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है, और क्रिस्टलाइन नेचर होने की वजह से हम उसको एक क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में रखते हैं. बट अगर मुझे क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो वी हैव वन ऑप्शन, एज आई टोल्ड यू, कि क्रिस्टलाइन को मैं हीट करूं और उसके बाद सुपर कूलिंग करूं. तो सुपर कूलिंग करने पर ऑर्बिट अरेंजमेंट होगी. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्ट्ज को आप क्या करोगे, पहले हीट करोगे और हीट करने के बाद जब वो मेल्ट होना शुरू होगा तो उस केस में हम उसके अंदर सुपर कूलिंग करेंगे, और सुपर कूलिंग करने के कारण जो क्रिस्टल पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स आर्बिट्रली कहीं भी अरेंज हो जाएंगे, और कहीं भी अरेंज होने की वजह से वो एक अमोर्फस कैटेगरी में कैरेक्टराइज हो जाएंगे. सो क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास वेरी इजीली. The next part is types of solid on the basis of molecular forces. Types of solid on the basis of molecular forces. The very first solid is metallic solid. The first one is metallic solid. See, what is metallic solid? Metallic solid is the universal solid, or you can say this solid, it has very strong intermolecular forces. It has strong metallic force.
has strong metallic force. And metallic force किसकी वजह से होता है? metallic force की अगर हम बात करें तो metallic force की वजह होती है electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between kernel and core electrons. Now what is kernel and core electrons? See, you have sodium with atomic number 11 and it has configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Now this part is known as valence electron and this valence electron is also known as core electron, because in bonding there will be loss of valence electron और जो valence electron lose होता है उसे ही हम core electron बोलते हैं. And ये core electron हो गया और जो कि valence electron है, और core electron के बाद जो मुझे ये positive part मिला, this positive part is known as kernel. तो basically होता क्या है? This is kernel, 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 and you have electron between them. So there will be attraction, and because of this attraction, there will be development of electrostatic force of attraction. और इस electrostatic force of attraction की वजह से जो metallic force होता है वो बहुत ही stronger force consider किया जाता है. और इसकी वजह से, इस force की वजह से इसकी दो properties influence होती हैं. सबसे पहला melting point और boiling point जो है are very high. The second property, hard in nature. So these two properties is totally depends on electrostatic force of attraction and strong metallic forces. So this is metallic solid. We have some examples, like you can take any examples, copper, silver, etc. These are the metallic solids. The second one is second type is ionic solid. Ionic solid, example NaCl, K2SO4, KCl, and many more. According to forces, as like metal, in metallic there is metallic force, and metallic force is due to electrostatic force of attraction between kernels and core electrons. But in this ionic solid there is electrostatic force, but this electrostatic force is not like metallic because there is ions. Because there is ions. For example, let's say this is NaCl, so there is Na plus and Cl minus, and between these two, positive negative, there is attraction. Because of attraction, there is electrostatic force. So the force of magnitude is electrostatic force between two different ions. This is the ionic solid. And after ionic solid, the third one is covalent. Covalent solids. Generally, covalent molecules, for example, like 2O2, all these are covalent molecules, but they are not in solid state because, according to molecular orbital theory and further Westberg
वो सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी के सभी कोवेलेंट होते हैं, बट उनका जो नेचर होता है दे आर नॉट इन सॉलिड स्टेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कोवेलेंट सॉलिड्स, दोज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स which are in solid state, जो कि solid state में present होंगे। जैसे for example diamond, graphite, silicon carbide, SiO2, silica, all these are covalent solid because they are giant molecules. Because they are giant molecules. Giant stand for, let's say you have this carbon. This is the structure of diamond. So in diamond, basically what we are getting a strong covalent networking, and because of strong covalent networking it has solid nature। and identify करने के लिए जहाँ पर भी giant molecule हमें दिखता है, जैसे कि for example मैंने आपको बताया diamond, graphite, silicon carbide, SiO2, ये सभी के सभी आपके covalent solid में consider किए जाएंगे। So this is the third type. Now we are going to discuss fourth type of solid, molecular solid। Molecular solids are basically two types: non-hydrogen bonding molecule and hydrogen bonded molecule। We have two different type of molecular solid: non-hydrogen bonding based molecule and hydrogen bonded molecule। Hydrogen bonded molecule, let's say we have ice, H2 solid। In case of non-hydrogen bonded molecule, we have I2। So when we will talk about non-hydrogen bonding and hydrogen bonding, there will be some force of attraction, and which type of force of attraction are there? Hydrogen bonding, let's say you have H2, in H2 there is polarity between oxygen and hydrogen, and because of this polarity it is polar in nature, it is sort of polar in nature, and because of polar, which force is present? Dipole। But in non-hydrogen bonding molecule there is dispersion force or London forces। All these are type of solids। So we have discussed crystalline, amorphous and types of solid on the basis of molecular forces। So if we have to identify, like मैं कोई एग्जांपल दे दूँ और मैं बोलूँ कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मोलिकुलर सॉलिड है, कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है और कौन सा मेटेलिक सॉलिड है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा हमारे फोर्सेस वाले पार्ट पे। जैसे मेटल की अगर हमने बात करें तो जहाँ पर भी मेटल की बात होगी वो सभी मेटलिक फोर्सेस कैरी किए जाएंगे